Hello my dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. In today's video we will discuss about future continuous tense. Okay, so आज के लेक्चर में जी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस करेंगे इन अ डिटेल्ड वे. Okay, and I will tell you the structure, the formula of all types of sentences, how you can make different sentences of future continuous tense. Okay, but before starting the lecture, only for 2 seconds I'm waiting for you. Just click the subscribe button, okay, and also क्लिक द बेल आइकन, ओके, सो दैट कि आपको जो भी मेरी वीडियोस हैं इंग्लिश से रेलिवेंट आपके लिए हेल्पफुल हो सके, तो आप उनको टाइमली वॉच कर सकें. ऑलराइट, सो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. First of all, future continuous tense, how you will identify the tense that this tense is a future continuous tense or this sentence is of a future continuous tense. Okay, so you can see that at the end of the Urdu sentences, जब भी आपके सामने उर्दू sentences आएंगे तो उसमें आप इस तरह के words देखेंगे एंड में. फॉर एग्ज़ाम्पल, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. इट्स एज यू नो इट्स कंटिन्यूस. हर कंटिन्यूस में इट मीन्स के कोई भी एक्शन जो है वो जारी है, राइट. सो कंटिन्यू है तो जारी है, राइट. एंड फ्यूचर है तो रहा होगा. ओके, सो दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यू कैन सी. फॉर इंस्टेंस, वो कहानी सुन रही होगी. ओके, सो शी विल बी लिसनिंग द स्टोरी. Okay, now let's see the structure or formulas of different types of sentences. So first of all we will discuss about the affirmative sentences, or in other words we can say positive or simple sentences का structure जो है वो हमारे सामने है. That is subject, then will, shall, and then we will put be, and then ing form as it's continuous, so ing form. In second term we can say that gerund form, okay, and then object. So let's see the examples and also let's make the sentences with me. Breeze, doctor से दवाई ले रहा होगा. So just use the structure and make the sentence. Okay, the patient will be taking medicine from doctor. Okay, वो चावल खा रही होगी. She will be eating rice. Okay, so that's very simple. What you have to do, you have to use the structure, okay, and just like this you can make the future sentences. Okay, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंसेस, और यू कैन से दैट आप जो भी फ्यूचर में जो भी आप सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं, सो जस्ट यूज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर टेंस एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस easily. Okay, now let's talk about the negative sentences. Okay, so what will be the structure for negative sentences of future continuous tense? That will be subject, will, shall, and not, obviously not because it's negative sentence, and then be, and then ing form, and then object. Okay, so let's see the examples. वो cricket नहीं खेल रहे होंगे. They will not be playing cricket. वो अंग्रेजी क्लास नहीं ले रही होगी. She will not be taking English class. Now have a look on the interrogative sentences. As you know that interrogative sentences के start में हम always क्या करते हैं, हम हमेशा हम जो helping verbs होते हैं उनको start में sentence के start में लगा देते हैं, right? So structure will be will, shall, then subject, then be, then gerund form, then object, and then question mark. Okay, so let's see the examples and let's make the sentences with me. क्या वो खाना पका रही होगी? Will she be cooking the food? Okay, क्या वो टीवी देख रहे होंगे? Will they be watching the TV? Okay, so as just like this, the structure will be same in the interrogative negative sentences, but only the word will be add that will be not. Okay, so as you can see that, but इसमें क्या होगा, subject के बाद not लगेगा and then be लगेगा, right? Will, shall plus subject, not, and be, and then gerund form, and then object, and then question mark. Okay, let's see the examples. क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे होंगे? Will the children not be playing in the ground? Okay, so just like this you can make the sentences. Alright, so as you know at the end of the every tense मैं आपको एक टेस्ट देती हूँ आपके असेसमेंट के लिए. सो यू हैव टू सॉल्व दिस टेस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू योर ऑन फिजिबिलिटी. जैसे आपको फिजिबल लगे आप इसमें कमेंट सेक्शन में भी मुझे इसके आंसर दे सकते हैं. ओके, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट. ओके, सो एज यू कैन सी द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ यू. मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही होंगी. वो वर्जिश कर रहे होंगे. हम क्लास से बाहर नहीं निकले होंगे. क्या तुम घर की सफाई कर रही होगी? क्या परिंदे उड़ रहे होंगे? सो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दीज सेंटेंसेस, ओके, बाय यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, ओके, and here is some blanks. You have to fill these blanks and you can mention the correct answer in the comment section. Okay,
First one is I blank during rush hour. Second, he will not be blank the bus today. And then they blank the cottage that weekend. And then fourth one, we are blank sleeping. And fifth one, we will be blank the news at 10 p.m. Okay, so just that's it for today's lecture. Okay, so future continuous tense, hope so कि आपको समझ आ गई होगी इस टेंस के बारे में. ओके, सो जस्ट सॉल्व द टेस्ट सो दैट आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें. सो दैट्स इट फॉर टुडे. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.